you are doing very well at home during current time. Today I am going to deliver first lecture about bed in summer unit number 1. This beautiful poem is written by Robert Louis Stevenson. He was born in 1850 and died in 1894. Robert Louis Stevenson was one of the most popular Scottish poets of the last part of the 19th century. I read first stanza. In winter I get up at night. मैं सर्दियों में जल्दी उठता हूँ जैसे कि सर्दियों में सुबह देर से होती है. एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट मोमबत्ती की रोशनी में. इन समर क्वाइट द अदर वे जैसे कि गर्मियों में इसका तरीका बिल्कुल चेंज है. आई हैव टू गो टू बेड बाय डे और मैं दिन को बिस्तर पे जाता हूँ. सेकंड स्टेंजा. आई हैव टू गो टू बेड एंड सी और मैं बिस्तर पे जाता हूँ और देखता हूँ. द बर्ड स्टिल हॉपिंग ऑन द ट्री. जो परिंदे हैं वो दरख्तों पे जंपिंग कर रहे होते हैं. और हेयर द ग्रो अप पीपल्स फीट और मैं सुनता हूँ ज़रीफ लोगों के कदमों की आवाज़. स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट और मैं अभी तक अपने आप को गलियों में देखता हूँ. थर्ड स्टेंजा. एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू और मैं देखता हूँ मुश्किल से आपको. व्हेन ऑल द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू और सारा आसमान साफ और नीले कलर का. एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले और मैं रात को बहुत पसंद करता हूँ. आई हैव टू गो टू बेड बाय डे और मैं बिस्तर पे जाता हूँ दिन को. In the poem Bed in Summer, the poet talks about the feelings of children who find it hard to go to bed in summer early because they want to enjoy playing and seeing things around. Please turn the page number 2 जहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो क्वेश्चन रेड लाइन से लिखा हुआ है वो आपकी असाइनमेंट है. सबमिट मी प्लीज सबमिट मी विद इन 1 week. ओके.